In this video you will learn how to use drag and drop feature of NetBeans to use radio buttons while building GUI in Java. Next, how to use checkboxes in Java. In many applications, you will be required to provide some choices to the user, and the user will choose one of the given choices. In this kind of situations, you can display radio buttons to the user. For example, if the user is required to choose one of the given choices, that whether he is male or whether she is female. So in this kind of situations, you can use radio buttons, and the user will select one of the given choices. To create radio buttons, you can use JRadioButton class. But this is important that every JRadioButton should be part of a button group. One JFrame, you can display one or more than one button groups. And in every button group, you can display two or more than two JRadioButtons. And in a single button group, only one JRadioButton can be selected. For example, you can use one button group to select gender from the user, and you can use another button group to select that in which shift he or she is working. The shift could be morning and the shift could be evening. So this could be required that the user can select one from the given choices in the shift, and he or she can select the gender from the gender group. So in this kind of situations, you can create multiple button groups, and in every button group you can use two or more than two choices, and for these choices you can use radio buttons. Now let us see that how you can use radio buttons in NetBeans. First of all, you need to create a project as usual. Next press कर सकते हैं. You can give any name to the project. For example, this is a default name. This is the default code. First, we need to create a G-frame. So you can create a file. From these options, you can select swing GUI frame forms, and this is the J-frame form. Next, you can change the name of the J-frame, or you can keep the same name. अब ये हमारे पास J-frame form आ चुका है, and this J-frame we need to display some options to the user in form of radio buttons. So on the right side, you can see there are different options. These are the different components which can be used on the J-frame, and one of the options is radio button. You can display, you can drag and drop one or more than one JRadio buttons. For example, I'm just dragging two JRadio buttons. The default caption is JRadio button 1 on the first radio button, and this is JRadio button 2 on the second one. If you want to change the text on a JRadio button, right click on it. This is the option edit text. आप इसके जरिए text को change कर सकते हैं. You can change the text like morning for the shift. Suppose this is the next one. Right click on this one and the edit text में जाके let's say कि आप यहाँ पे evening type कर लेते हैं. So these are the two options for the shift. Let us add two more radio buttons. For example, this one for male and the next one for female, for example. इसके भी हम text change कर लेते हैं. Suppose this is male, and let us change the text of the next one. Suppose this is female. First we need to make it visible. हमारे पास जो भी J-frame का नाम आए तो you can go to the source, and from here you can see the name of the class. और यहाँ पे main method में जाके हमें इसका object बना के visible करना पड़ेगा. Suppose the name is frame, and you need to make this visible. Set visible property को आप true करेंगे. Once this is made true, now you can run the application. अब यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, हमारे पास इस J-frame पे 4 radio buttons हैं. यहाँ पे suppose this one is for morning shift and this one is for the evening shift. Now interestingly you can see कि यहाँ पे आप दोनों options को select करना चाहें तो कर सकते हैं, और सेम यहाँ पर भी अगर मैं दोनों को select करना चाहता हूँ तो क्लिक करके select कर सकता हूँ.
दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड बिहेवियर। हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि मेल एंड फीमेल में से हम किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करवा सकें एंड फ्रॉम द मॉर्निंग एंड इवनिंग वन ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है रेडियो बटन्स का, एक जे फ्रेम पे हमारे पास जितने रेडियो बटन्स होते हैं, आप उनमें से जिस चीज़ को क्लिक कर रहे होते हैं वो सारे सिलेक्ट हो रहे होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं ये चाहूँ कि मॉर्निंग इवनिंग में से वो किसी एक को सिलेक्ट कर सके और मेल एंड फीमेल में से किसी एक को सिलेक्ट कर सके, तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं? टू डू दिस थिंग हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। नो दिस इज द जे फ्रेम जिसपे हमारे रेडियो बटन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। यू कैन सी दैट दिस इज अ बटन ग्रुप। आपको डिफरेंट बटन ग्रुप्स को ऐड करना पड़ेगा ऑन द जी फ्रेम और जितने रेडियो बटन्स होते हैं उन तमाम को किसी बटन ग्रुप का पार्ट बनाना पड़ेगा। फिर किसी एक बटन ग्रुप में हमारे पास जितने रेडियो बटन्स होते हैं उनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको जस्ट हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यू कैन सी दिस ग्रुप इज नाउ क्रिएटेड एंड द नेम ऑफ दिस इज बटन ग्रुप 1। अगर आप इसके नेम को चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कीप द नेम सेम तो आप उसको सेम भी रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट दिस इज बटन ग्रुप 1। लेट्स से कि इसको मैं यहाँ पे बटन ग्रुप कर लेता हूँ जेंडर, ताकि वो मेल या फीमेल में से किसी को सेलेक्ट कर सके। नाउ यू कैन सी द नेम इज चेंज, दिस इज बटन ग्रुप जेंडर। दिस इज बटन ग्रुप, इसका डिफॉल्ट नेम जे जे रेडियो बटन 3 है। अगर आप इसको सेम रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि द नेम शुड बी मीनिंगफुल। अगर आप इसके वेरिएबल नेम को चेंज करना चाहें तो बेहतर ये कि आप इसको एक मीनिंगफुल नेम दें। एंड लेट अस मेक द नेम इज जे रेडियो बटन मेल। इसी तरीके से अगर आप इसका डिफ़ॉल्ट नेम देखें तो ये हमारे पास जे रेडियो बटन 4 है। इट शुड हैव अ मीनिंगफुल नेम। सो टू चेंज द नेम यू कैन क्लिक ऑन द चेंज वेरिएबल नेम एंड मेक इट जे रेडियो बटन फीमेल। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो मेल एंड फीमेल के जो रेडियो बटन्स हैं दे शुड बी पार्ट ऑफ द बटन ग्रुप जेंडर। तो ऐसा करने के लिए आप किसी एक को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बटन ग्रुप का। बटन ग्रुप में जाके हमारे पास ये एक ऑप्शन आएगा बटन ग्रुप का। आपने एक जे फ्रेम पे जितने बटन ग्रुप्स बनाए होंगे वो सारे हमारे पास यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। करंट हमारे पास एक ही बटन ग्रुप हमने बनाया हुआ है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये जो मेल था ये आपके बटन ग्रुप जेंडर का पार्ट बन चुका है। नाउ यू कैन चेंज द बटन ग्रुप ऑफ द सेकेंड रेडियो बटन। मैंने यहाँ फीमेल वाले को क्लिक किया और यहाँ पे जाके बटन ग्रुप में मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये दोनों बटन ग्रुप जेंडर का पार्ट बन चुके हो। अगर मैं अब इसको यहाँ से रन करता हूँ देन यू कैन सी द चेंज। इसका जो बिहेवियर है वो अब चेंज हो गया होगा। ये मैं यहाँ से मेल को सिलेक्ट करता हूँ फिर फीमेल को करूँ एंड यू कैन सी द डिफरेंस। अब आप इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दो रेडियो बटन्स को मैंने किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनाया, तो डिफ़ॉल्ट जो इसका बिहेवियर है आप किसी भी रेडियो बटन को सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड बिहेवियर। सो नाउ यू नीड टू चेंज दिस बिहेवियर। और इसको चेंज करने के लिए मुझे इनके लिए भी बटन ग्रुप बनाना पड़ेगा। जस्ट आप यहाँ पे जाके एक और बटन ग्रुप को जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दिस इज द न्यू बटन ग्रुप। डिफॉल्ट नेम इज बटन ग्रुप 1। अगर आप इसके वेरिएबल नेम को चेंज कर लेते हैं तो लेट अस मेक इट बटन ग्रुप फॉर एग्जांपल शिफ्ट। अब मैं इन दो रेडियो बटन्स को इसका पार्ट बनाना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसका एक मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं। अगेन इसको आप वेरिएबल नेम में जाके इसका बाय डिफॉल्ट नेम जो है वो जे रेडियो बटन 1 है। इसको मैं जे रेडियो बटन मॉर्निंग करना चाह रहा हूँ। एंड रिमेंबर every component should have a meaningful name and the name of this radio button could be changed like J radio button evening. So in this way you can change name of any component. इनका जो बटन ग्रुप है वो हम यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर लेते हैं। यू कैन सी यहाँ हमारे पास सिर्फ दो बटन ग्रुप्स हैं। उनमें से एक हमारे पास बटन ग्रुप शिफ्ट है। ये हमने इसका पार्ट बना दिया बटन ग्रुप शिफ्ट का। इवनिंग को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद ये मैं इसको भी इसका पार्ट बनाना था। After becoming part of a button group, one of these options can be selected at runtime. Let us check इसका क्या behavior बनता है। Now let us see. From these two options, you can select one of them, and from these two options, you can select one of them. It means कि किसी भी एक बटन ग्रुप में आप किसी एक को सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। Now the next question is कि हमें कैसे आइडिया होगा कि यूजर ने रन टाइम पे इन दोनों में से किसको सेलेक्ट किया है। तो
इसके लिए हमें छोटा सा एक कोड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने कोड लिखा और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड को भी ले आता हूँ। द नेम ऑफ दिस जे टेक्स्ट फील्ड 1 इज जे टेक्स्ट फील्ड 1। चेंज करना चाहें तो चेंज करें, फिलहाल यू कुड गो के इसका सपोज इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। इसका जो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल नेम है वो जे बटन 1 है, इसको मैं जे बटन शिफ्ट कर लेता हूँ। अब इसको क्लिक करने के बाद यूज़र ने इन दोनों में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा उसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ इस जे टेक्स्ट फील्ड 1 में। तो ऐसा करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर डबल क्लिक कर लें। तो दिस इज द कोड जो कि एग्जीक्यूट होगा व्हेन द बटन इज क्लिक एट रन टाइम। तो यहाँ पे कीप इन माइंड कि किसी बटन ग्रुप में हमारे पास जितने भी रेडी बटन्स होते हैं, तो आपको अगर ये देखना है कि उनमें से कौन सा यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा, देन यू हैव टू यूज़ अ नेस्टेड इफ। और वो कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे इफ़ और उसके बाद जो हमारे पास नाम था रेडी बटन का, लेट मी चेक अगेन कि हमने इसका नाम क्या रखा है। यू कैन सी द नेम इज जे रेडियो बटन मॉर्निंग और इसका जो नाम था वो जे रेडियो बटन इवनिंग है। तो इसके जो वेरिएबल नेम्स है ये बेसिकली हमें यूज़ करना होंगे फाइल राइटिंग द कोड। तो यहाँ पे हमें उनके जो नेम्स है वो रिक्वायर्ड होंगे। एक हमारे पास जे रेडियो बटन मॉर्निंग का, हम ये चेक करते हैं कि क्या यूज़र ने इसको सिलेक्ट किया या नहीं किया। हमारे पास एक मेथड है इस सिलेक्टेड का। तो अगर सपोज यूज़र ने इस रेडियो बटन को रन टाइम पे सेलेक्ट किया होगा, देन दिस विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज दिस विल रिटर्न फॉल्स। इफ दिस इज ट्रू तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारे पास जे टेक्स्ट फील्ड थी, दैट वाज जे टेक्स्ट फील्ड 1, उसमें मैं इसका जो आउटपुट डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। सो यू कैन राइट द कोड लाइक हम ऑलरेडी सेट टेक्स्ट यूज कर चुके हैं। सपोज द गिवन चॉइस इज मॉर्निंग और उसके बाद यू कैन यूज एल्स इफ एल्स इफ यूज करेंगे इन अ बटन ग्रुप, तो हमारे पास एक बटन ग्रुप में जितने भी चॉइसेस होंगे यूजर उनमें से किसी एक को रन टाइम पे सेलेक्ट कर सकता है। और ये देखने के लिए कि यूजर ने कौन सी चॉइस सेलेक्ट की है, फॉर दिस पर्पस यू कैन यूज इफ एल्स। नाउ लेट अस सी के व्हाट इज द आउटपुट। ये हमारे पास जे फ्रेम आ गया। इफ मॉर्निंग इज सिलेक्टेड then you can see, let me change the size of the, sorry, क्योंकि पूरा टेक्स्ट इसमें आ नहीं रहा था। नो लेट मी रन इट अगेन। नाउ इफ मॉर्निंग इज सिलेक्टेड और इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, देन द गिवन चॉइस इज मॉर्निंग। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देन द गिवन चॉइस इज इवनिंग। सो इन द गिवन ऑप्शंस यू कैन सेलेक्ट मॉर्निंग और इवनिंग, और इनमें से आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा तो हमारे पास उस हिसाब से यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है वो परफॉर्म हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि आप इस तरह कोड लिख सकते हैं। द सेम कोड कैन बी रिटन फॉर दिस ग्रुप एज वेल। जैसे आपको दिखाना था कि कैसे आप मल्टीपल ग्रुप में मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं, तो कोड हमारे पास ऑफकोर्स इसका डिफरेंट होगा जो भी आप करना चाहेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द चॉइसेस कि आप ये कोड ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी कोड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो आपने इफ जे रेडियो बटन मॉर्निंग इज सिलेक्टेड देन दिस थिंग शुड बी डन, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके मैं इस मॉर्निंग वाले रेडी बटन को डबल क्लिक किया। तो दिस इज द कोड, दिस इज द मेथड व्हिच विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन दिस चॉइस इज सिलेक्टेड एट रन टाइम। तो मैं उस कोड को यहाँ भी कॉपी कर सकता हूँ। एंड इन द सेम वे जो मैंने कोड लिखा था फॉर द सेकंड चॉइस, सॉरी, दिस वाज द कोड फॉर द सेकंड चॉइस। इसको मैं यहाँ से अगर सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जब यूज़र इसको सेलेक्ट कर ले तो ये वाला कोड रन होना चाहिए। तो इनफैक्ट दोनों का काम एक जैसे ही होगा। जब जे रेडियो बटन मॉर्निंग को आप क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट फील्ड में ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप जे रेडियो बटन इवनिंग को सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में हमारे पास ये काम होना चाहिए
तो बजाय कि आप एक एक्स्ट्रा बटन यूज़ करें, तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी ये कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नो मैंने मॉर्निंग को क्लिक किया तो ये वाला काम हुआ, मैंने इवनिंग को सेट किया तो ये वाला काम हुआ। सो इन दिस केस यू डोंट नीड टू यूज़ एन एक्स्ट्रा बटन।